ओके आज हम डिस्कस करेंगे फैंसी डांस विच इज़ अ 2023 अमेरिकन मूवी and it is about a family in which the elder sister goes missing. The film is not actually just about finding the missing lady but much more than that. It's about human relation, human emotions and the societal issues that are there in the USA. राइट सो इन सब चीज़ों पे ये फिल्म बेस्ड है एंड आई हैव अ फ्रेंड विद मी Sudeshna, who is a writer, poet, and she is a curator of Purvanchal or Palayan, which is a online archive of the migration happening in the country. She is also a researcher and editor, and she is interested in gender, culture, and ecology. And her works have been published in various platforms. She is also a recipient of South Asia Speaks 2022 Fellowship, and lastly, a 10 by 10 research grant on photo book history. So she has a lot of accolades. To her. So yeah, that's for the intros and now let's begin. Yeah, I really enjoyed it. Okay. And I'm also a huge Lily Gladstone fan. तो मुझे लगा Okay. this is the movie I will recommend. Okay. So like और कौन सी मूवी देखी है इसकी लिली ग्लैडस्टोन की? Killers of the Flower Moon. Oh yeah, she is in that. Yes, Killers of the Flower Moon. Yeah. People know her Through because that. of that. Yeah, I have not seen that movie, but उसका ट्रेलर वगैरह कुछ तो देखा है मैंने. हाँ. And if you have seen any of Kelly Reichardt's films, there's one called Certain Women. तो वो anthology type है. Okay. And there's Kristen Stewart. Kristen Stewart is, I hope you know her. Yeah. Yeah. So she's there, and a lot of other actresses are there. Laura Dern is there, and so it's like 4 women ka story, and she's like one of them. And Okay. all stories are interconnected. Uh-huh. I've known her like Okay. yeah, for a काफी long पहले time. से. हाँ. एक्चुअली अमेरिकन मूवीज़ नो आई जनरली डोंट वॉच क्योंकि यार बचपन से बड़े हुए हैं ना तो वो अमेरिकन मूवीज़ ही देख देख के बड़े हुए हैं. सो मेरे को थोड़ा सा ऐसे हो गया है कि नहीं देखना है मेरे को अमेरिकन मूवी कोई. सो आई जस्ट लाइक लुक फॉर फिल्म्स मोस्टली इन साउथ ईस्ट एशिया. सो मैं जापानीज़ फिल्म्स और नॉट वियतनामीज दिस थाई मूवीज़, चाइनीज़ फिल्म्स और ये ताइवानीज़ फिल्म्स ये सब मैं बहुत देखता हूँ. स्पेशली आई रियली लाइक ताइवानीज़ मूवीज़ एंड चाइनीज़ फिल्म्स. मतलब वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दोज प्लेसेस बट इफ़ यू वॉच द मूवीज़ ना वो एक ह्यूमन कंडीशन होता है ना. दोज गाइज कैप्चर दैट रियली नाइसली. My favorite director is actually Wong Kar-wai. Okay. So yeah. Okay. Wong Kar-wai is from Hong Kong, I think. Yeah. हाँ वो Hong Kong से है. But Southeast Asia. Yeah, Southeast Asia, yeah. Wong Kar-wai, I think his work is very stylized. So yeah, so in all of his films he chooses one particular style and then uses it particular like अच्छे से जो भी उसकी स्टोरी को सपोर्ट कर रहा है वैसे करके. एंड मुझे पर्सनली आई डोंट एन्जॉय वेरी स्टाइलाइज्ड मूवीज़ अनलेस इट्स समथिंग लाइक जॉन विक जिसमें स्टाइलाइजेशन चलता है. आई मीन इट्स जस्ट कमर्शियल मूवीज धूमधाम चल रहा है. So you don't like style over substance, एकदम नहीं. नहीं, आई डोंट रियली लाइक इट. आई लाइक मूवीज़ जो थोड़ा डॉक्यूमेंट्री जैसा फील होती है और वो बहुत बोरिंग होती है. आई नो दीज काइंड ऑफ मूवीज़ आर रियली बोरिंग बट दैट्स व्हाट आई लाइक. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दोज काइंड ऑफ मूवीज़ हेल्प मी कनेक्ट बेटर विद द कैरेक्टर्स और वो जो ह्यूमन जस्ट इमोशंस एंड फीलिंग्स सो आई कैन रिलेट मोर विद दैट. उसको जब सिनेमा के ट्रोप्स यूज़ करके लाइक कैमरा वर्क एंड एडिटिंग एंड साउंड वो सब यूज़ करके व्हेन यू हाइटन इट फॉर मी दैट लूजेस द इम्पैक्ट ऑफ द थिंग. Okay. Yeah. So that's why I don't really prefer watching very stylized movies. That's why I don't really like this guy also. Shit. The Grand Budapest Hotel guy. I don't shit उसका नाम क्यों नहीं याद आ रहा है मुझे. Wes Anderson. Yes. So इसीलिए I don't really like his work. I mean, it's my problem, not his problem. Yeah. No, but I am one of those people. So you have studied films, right? Yeah. In an ID. Yeah. So I am a literature student. For Okay. me, I have always considered the structure and content
like how you, like the content itself is not enough, like you Mhm. always need to structure it in a particular way Uh, which highlights, if it's one genre you want to highlight, yeah, great. If you okay. want to highlight like the fluidity of genres, that's also Uh, great. okay. But I am one of those people who sort of tends to go style over substance. That's why I asked. ओह! ओके। ठीक है यार, सबका अपना-अपना है। लाइक मैनी ऑफ माय फ्रेंड्स आर लाइक दैट। जैसे कि दिवाकर बैनर्जी, राइट? हिज़ मूवीज़, अर्लियर मूवीज़ आर वेरी स्टाइलाइज़्ड एंड सब फ़ैन है यार उसके एनआईडी में। सब फ़ैन है यार कि यार ठीक है ना, मतलब वही लक्की लक्की वही है। वो उसकी वो अच्छी थी, द फर्स्ट मूवी, घोंसला का घोंसला। दैट वाज़ रियली गुड, आई एन्जॉयड इट। उसके बाद फिर उसका वही स्टाइलाइज़ेशन बहुत हो गया था। He did one of the stories in Ghost Stories. या, Which one was his आई story? हैव नॉट सीन इट बट ही हैज़ डन दैट। आई नो अबाउट दैट। वो किया उसने। एंड या सो वही है, वो चीज़ है। बाकी इन दिस फिल्म, राइट, इट्स नॉट वेरी स्टाइलाइज्ड फैंसी डांस। Mm. इट्स अ नाइस मूवी, लाइक इट्स ऐसे चलता रहता। सो लेट मी जस्ट टेल व्हाट आई फेल्ट अबाउट इट फ्रॉम अ film making perspective and platform perspective. So Apple TV, right? Apple TV has this हर प्लेटफॉर्म का कुछ रिक्वायरमेंट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होता है। सो एप्पल टीवी का जो रिक्वायरमेंट है वो इसमें दिख रहा था। सो द फ्रेम्स आर सपोज टू बी क्लीन एंड वेरी नाइस। तो वो दिख रहा था मुझे कि हाँ ये एप्पल टीवी का मूवी है, विच वॉज वेरी अपेरेंट टू मी। एंड देन देर वॉज दिस ऐसे हेज मतलब व्हेन यू हाइटन द हाईलाइट्स को थोड़ा सा कम करते हो और शैडोज़ को बढ़ाते हो ना, तो वो डेप्थ कम हो जाता है। वो चीज़ इस मूवी में है। आई डोंट नो, यू मस्ट हैव नॉट हैव नोटिस्ड ये सब। वो मुझे दिख रहा था वो। सो दैट थिंग फॉर मी वॉज वेरी वेरी अपेरेंट। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था, तो मैं थोड़ा सा उस वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा था टेक्निकल उसकी वजह से। सो मैं फिल्म में स्टार्टिंग में उतना एकदम मतलब घुस नहीं पाया बिगनिंग में। बट देन क्या होता है बिगनिंग में, देर इज़ दिस सीन इन विच दिस लिली ग्लैडस्टोन वो लेक पे रहती है, एंड देन देर इज़ दिस गाय हु इज़ फिशिंग एंड देन शी रिमूव्स हर टॉप और वो सब। So that scene was written very nicely in the sense that it intrigued me कि ये चल क्या रहा है. At the same time, it showed a lot of things about the character to me. That first of all उसका जो बाल है, right, नेटिव अमेरिकन्स दे हैव दिस वे ऑफ टाइंग देयर हेयर, तो वैसे ही बंधा हुआ है. सो इमीडिएटली आई अंडरस्टूड शी इज़ अ नेटिव अमेरिकन, प्लस द क्लोथिंग एज वेल, प्लस द फिजिक एंड एवरीथिंग. तो नेटिव अमेरिकन, शी इज़ अ नेटिव अमेरिकन, एकदम समझ में आ गया. एंड देन शी इज़ रिमूविंग हर टॉप, शी हैज़ बॉडी हेयर एंड दिस दैट. उसका मतलब आई गॉट, हो शी डजंट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बिंदास है. सो आई इमीडिएटली अंडरस्टूड हर कैरेक्टर. प्लस साथ में उसका जो डिमीनर था ना, दैट गेव मी अ हिंट ऑफ दैट शी माइट नॉट बी स्ट्रेट, शी माइट बी अ LGBTQ person. So all that information was conveyed to me very nicely without speaking any word. And after that, her niece या हाँ niece, she goes behind the guy and just steals his truck and everything. So I was like कि okay, ये तो कुछ गलत हो रहा है, बट ठीक है देखते हैं. तो वो सब हुआ एंड देन वी गेट टू नो कि हाँ द रिलेशनशिप इज़ नीस एंड आंट वाला रिलेशनशिप है. एंड जो भी उसकी जो मॉम है, शी इज़ नॉट देयर. सो द स्टोरी प्लेज आउट एंड द वे द स्टोरी प्लेज आउट वॉज ओके, मतलब अच्छा लगा मुझे. ऐसा कोई ग्राउंड ब्रेकिंग कुछ था नहीं उसमें. ओवरऑल फिल्म में फिल्म मेकिंग परस्पेक्टिव से, लाइक स्टोरी टेलिंग परस्पेक्टिव से कुछ ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं था. इट्स अ वेरी रेगुलर, वेरी नाइसली मेड मूवी, but it raises a lot of very important questions about the क्या बोलते हैं stand of Native Americans in that society. So white people have given Native Americans this land और वो वहीं पे रहते हैं. एंड सो कॉल्ड मतलब वो गवर्नेंस भी नेटिव अमेरिकन्स के हाथ में, दिस दैट जो भी है. बट व्हेन इट कम्स टू थिंग्स दैट एक्चुअली मैटर, like when her elder sister goes missing and she is calling the FBI to just look after her, वो नहीं सुनते हैं.
Why? Because she is a Native American, and white people apparently have some kind of a notion against Native Americans. So that thing, and then uske jo papa hai, he's a white guy, so he has a stronger standing in the society. So वो जब complain करता है तो पूरा like FBI and police and everything comes there. So that thing has been shown very nicely. ऑल दोज इश्यूज, ऑल द सोसाइटल इश्यूज, ऑल द जेंडर इश्यूज, वो जितने भी चीज़ें हैं ना, वो बहुत अच्छे से इस फिल्म में कन्वे किया हुआ है विदाउट स्पीकिंग मच. सो दैट थिंग आई रियली लाइक्ड. बाकी हाँ इतना ही है. बट देन एक चीज़ मुझे बहुत, आई डोंट नो, आई एम कॉन्फ्लिक्टेड अबाउट इट कि वो जो चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज वाली जो एक औरत होती है, वो आके शी इज़ लाइक कि यू कांट लिव विद योर आंट. मतलब बच्ची को बोलती है कि लाइक वी आर टेकिंग हर अवे एंड पुटिंग हर विद हर ग्रैंड पेरेंट्स. सो I felt with the things that play out in the movie, I felt that that decision was a correct decision because she is obviously not a good this thing, good example for that kid. उसको चोरी करने सिखा रही है यार वो, राइट? और शी इज़ एक्चुअली पुटिंग दैट चाइल्ड इन डेंजरस सिचुएशंस. जैसे कि गैस स्टेशन पे उसको बोलती है अंदर जाके चाबी चुरा के ले आ. सो ऑल दोज थिंग्स, राइट? आई रियली फेल्ट कि दिस वुमन इज़ नॉट एक्चुअली गुड guardian. उनका relationship on the other hand, that is really precious. But the क्या बोलते हैं, the impact that relationship is having on that kid is not right. वो मुझे लगा. बाकी फिर हम बात कर सकते हैं उसके ऊपर कितना सही है कितना गलत है रिलेशनशिप एंड दिस दैट, वो सब हम डिबेट कर सकते हैं. सो या ये फ़िलहाल अभी मेरे पास इतना है बोलने के लिए. Yeah, I think that's मतलब the way मैंने जिस तरह से read किया फिल्म को या फिर the way I enjoyed it, it's completely different. Okay. Which is, I guess it's nice because मैंने इस तरह से कभी सोचा नहीं था. First of all, the thing is, मैं इतने सालों से like the kind of literature that I've been reading and the kind of things that I write and research, I was already embedded in that मतलब जो socio cultural history है उस पूरे situation का. So the very term MMIP, which is missing and murdered indigenous person. So I have मतलब मैंने बहुत सालों से follow किया है, and one of the reasons was there is this Native American writer Zitkala Sa बोल के, एंड उनका एक मैं सीबीएसई में पढ़ी थी, राइट? तो हम लोग का कुछ टेक्स्ट इंग्लिश लिटरेचर उतना इट वाजंट गुड, बट दे हैड सम गुड टेक्स्ट. तो आई distinctly remember कुछ इंग्लिश क्लासेस, ऑफ कोर्स इट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड टीचर्स भी अच्छे थे, और इट वाज सम ऑफ कोर्स द लेसन इटसेल्फ, मतलब जो राइटिंग था वो बहुत ही हार्ड हिटिंग था. तो उतने पुराने मतलब टाइम का एक क्लास भी मुझे अभी तक याद है, एंड इट वाज अबाउट दिस. तो इंडिजिनस बच्चों को दे यूज्ड टू टेक देम टू दीज स्कूल्स, एंड देयर वाज लाइक अ प्रॉपर, you could call them stolen children, बिकॉज उनके लाइक नेटिव अमेरिकन के गार्जियनशिप से उनको लेके अलग एक स्कूल में पढ़ाया जाता था, एंड वहां पर उनके साथ एक प्रॉपर, इट्स नॉट जस्ट फिजिकली उनको अपने पेरेंट्स से या उनके गार्जियन या उनके फैमिली के वहां से लेके आना, इट वाज आल्सो हाउ दे वर बहुत ही वायलेंटली द वे दे वर देयर रिलीजन एंड उनका जो कल्चर था उनसे जिस तरह से निकाला गया, एंड इट हैज अ लॉन्ग लॉन्ग हिस्ट्री. So उस स्टोरी में काला सा इज राइटिंग कि they don't cut their hair. You mentioned that they tie their hair in a particular way, and she was forced, and she has written it like, and I think the text is called Memories of a Childhood. Okay. And उसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरह से उनको ना जबरदस्ती बाल काटने के लिए उनको बोला गया. So first of all, this history of two histories. One is a missing and murdered indigenous person. Apparently every family will know one of these stories. Okay. Personal एक relation होगा उनका indigenous culture में. That is one. Secondly, ये जो forcibly बच्चों को लेके गया है, ये भी एक कल्चर में उनका मतलब एक कम्युनिटी ट्रॉमा आप बोल सकते हैं.
सब पंजाबीज या सब बंगालीज का एक पार्टीशन स्टोरी कुछ ना कुछ Yeah. कनेक्टेड होगा. Yeah. इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू दैट. Yeah. Yeah. So there are these two things. Secondly, the way the kind, first of all, अगर आप लिटरेचर या फिल्म कुछ भी पढ़ोगे, आप एक पॉइंट पे, इफ यू द मोमेंट यू थिंक अबाउट जेंडर, यू विल थिंक कौन बना रहा है, प्रोडक्शन कौन कर रहा है, Mm-hmm. who is making these movies, and it's not just about up like male gaze के बारे में जो बात Mm. करते हैं. It is because director जो होता है, the person wielding the camera is a man, and the person in front of you, like जिसका स्टोरी बताया जा रहा है, Mm. इवन इन लिटरेचर में भी, लाइक बड़े बड़े जितने भी क्लासिक्स में अगर Yeah. बोलूं, Yeah. 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 पोखरवाली से लेकर के टैगोर, great writer and respected cultural figure. Again, most of his stories are about women, but he's a man writing them. Mm. Tolstoy, same. Yeah. Yeah. Ibsen, same. You see the Yeah. pattern Yeah. there, Yeah. right? Yeah. So अगर आप इस तरह से इंडिजिनस मूवीज का अगर बात करेंगे, कौन सा Mm. स्टोरीज है? फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक यू मेंशन्ड अमेरिकन मूवीज, Mm. दे हैव दिस होल, लाइक डीसी और मार्वल ने बहुत Yeah. कुछ, like they have invisibilized other kind of Yeah. stories. Yeah. And one of the stories that I remember watching, again, वही indigenous stories से related, it's called Wind River. Okay. And Sicario, अगर आपने हाँ, सुना है देखिए तो, देखिए the मैंने. person who wrote Sicario is the person who wrote Wind River, and the way it's written is like a thriller. Okay. So I think it's Jeremy Renner and Elizabeth Olsen. उनका Okay. film है, and this again, वो एक white woman, she's going to a reservation, she's trying to Mm. look for MMIP, and then again there is a white man who has probably lost, a mixed race child, Mm. and हमेशा इस टाइप के जब स्टोरीज मैंने नोटिस किए हैं, जब एक Mm-hmm. जेंडर बेस्ड ट्रॉमा या वायलेंस का कल्चरली उसको जब पोर्ट्रे किया जाता है, एंड इफ Mm-hmm. इट्स अ मैन राइटिंग और डूइंग इट, Mm-hmm. the victim is always, the perfect victim. Okay. What do you mean by that? So perfect victim is basically, she's like an angel who was, taken Ah, away, like okay. something bad happened to her, and she did Mm. no wrong, she did not deserve it. Mm-hmm. So which is why जो भी आप बहुत ग्रूसम कोई अगर जेंडर बेस्ड केस अगर न्यूज़पेपर में आता है, उसमें हमेशा उस लड़की को, मतलब कितनी अच्छी थी, कितना कुछ Mm-hmm. कर सकती थी, लाइक शी इज ऑलवेज परफेक्ट, Mm-hmm. but humans are not like that. Yeah. Men, women, nobody is Yeah. perfect, right? And I felt this movie for me was groundbreaking on both these ways. Mm. First of all, इसमें वो फीमेल गेज जो है कि एक फीमेल राइटर बना लिख रही है, डायरेक्ट कर, Mm-hmm. एंड विच इज मिसिंग इन अदर इंडिजिनस फिल्म्स, Yeah. वेरी बहुत कम देखे Permanently. हैं मैंने. Mm-hmm. और देयर इज एक्चुअली अनदर वन कॉल्ड प्रे. Mm-hmm. तो इफ यू हैव सीन प्रेडेटर, दैट Predator. एलियन. Yeah. बहुत पहले देखी थी यार वो तो. हाँ, तो प्रेडेटर का एक प्रीक्वल निकला है कॉल्ड प्रे, Okay. which is entirely in one of the indigenous languages, and Okay. it is it's actually a brilliant movie, and Mm-hmm. I think you will like that more because Okay. uh, yeah, I have a feeling you will like Prey more. I think it's on Amazon. You should Okay. watch it. बहुत Mm. छोटी movie है. It's about, again, it's around the time the genocide was happening when Mm. Americans were being killed. Yeah. Yeah. So, and in a sci-fi setting, so that's like genre breaking on a different. Mm-hmm. So yeah, I feel like this movie is, for me, it's groundbreaking because of this gaze. Mm. It does not have a perfect victim. Yeah. She's Yeah. not a victim. The protagonist, both of them, are not victims. Mm-hmm. But what they're dealing with is, again, a very, very uh, it's a community trauma. I mean, Mm-hmm. Yeah. any Yeah. community that has gone through any traumatic, Yeah. Yeah. whether it's colonialism, whether it's anything, caste, Mm-hmm. it's sort of uh, it's a great thing that American cinema has something like this. And actually, when I had followed the movie, Mm-hmm. it was not getting distribution, and Okay. I was very happy that Apple took the distribution. I don't know why, because there were like long conversations कि इसे festival से festival जा रहा था, and Mm-hmm. like it was winning awards, but nobody was distributing it. And Lily Gladstone, the same year she became like famous because of Mm-hmm.
Scorsese के और DiCaprio के साथ she's doing this big budget film. Yeah, yeah. She kept talking about this little film which Uh, nobody is watching, and she's like, "Please go watch that movie. I okay. know you're here for this movie." But so I was really actually glad that Apple. Oh, that's what happened. तो फिर एप्पल वालों ने उसको और कुछ करवाया है क्या? Why did it Maybe, look like that? yeah, maybe Hmm. maybe the Or maybe I spec- am reading too much. I don't know. वो भी हो सकता है because it's Apple. yeah. Or indigenous movies, a lot of them they don't get distribution that easily. Sometimes I feel, even in Indian context. Mm-hmm. Yeah. यार सी अमेरिका इज़ अ वेरी बाहर से जो मेरा परसेप्शन है अमेरिका का वो ये है कि इट्स अ डीपली रेसिस्ट कंट्री, इट्स अ डीपली सेक्सिस्ट कंट्री. कमला हैरिस वहाँ पे जीत ही नहीं सकती है, नहीं जीत सकती है वो. How इट्स long is left for the voting नो, इट्स results? डन. नो, ही इज़ वन ऑलरेडी. Is one? या डोनाल्ड ट्रम्प हैज़ वन. आई डोंट केयर कोई भी जीते वहाँ पे, Yeah, बट it's the या people behind the. कोई भी हो बिहाइंड फ्रंट, आई डोंट केयर. अमेरिका है, मैं इंडिया में रहता हूँ यार, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे. बट बात यह है कि अमेरिका में दिस लाइक इट्स अ वेरी रेसिस्ट एंड सेक्सिस्ट कंट्री. और ये लाइक आई डोंट नो, मतलब इस फिल्म में आई गेस ये चीज़ बहुत ही सटली एंड वेरी नाइसली लाइक दे हैव सेड इट विदाउट स्पीकिंग द वर्ड्स. सो वो मुझे अच्छा लगा. इट रेजेस द राइट क्वेश्चंस द करेक्ट वे. So there is this movie called Mamannan, Tamil movie है. It's made by the same guy who did Vazai जो last हमने बात करी What थी. is it called? Mamannan. Okay. So this Mamannan movie, it's saying the right things but the wrong way. अच्छा. Yeah. तो वो एक तरीका होता है कुछ चीज़ बोलने का. मतलब अगर आप कास्ट ऑपरेशन दिखा रहे हो तो उसको वायलेंस का ग्लोरिफिकेशन होता है ना. Don't do that with that thing because it's a very sensitive topic. So in this movie the things that have been said are said in a very sensitive way. And now when you told me about कि ये मिसिंग पर्सन्स का एक ट्रॉमा है, लाइक सोसाइटल ट्रॉमा है, और बच्चों को लेके जाते हैं, लाइक वो आई थिंक कनाडा में भी हुआ है वो सेम चीज़. या Yeah. so I know about Canada. So when you tell me about those things, the meaning of this movie changes for me. Then I can look past the behavior of her aunt because she just wants to be with that kid. उसको पता है कि क्या हो सकता है, रिपरकशंस क्या है अगर वो उसने छोड़ा उस बच्ची को अलग. तो सो व्हेन यू टेल मी दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट. उसके पहले आई वाज लाइक यार ये तो मतलब कुछ गलती हो रहा है, ये दिस इज नॉट राइट. या So she is endangering the kid, and या like the end of the movie, you are like, मतलब जो हाँ. niece रहती है, she is only like scolding her like you're supposed to be this, जो उनके language में little mother है, या and अदर मदर. other mother, yeah. या That's something also like हमारे culture के साथ, like Asian cultures, I would say, we have a like aunt के लिए भी, मासी. हाँ, मासी पीसी जो बुआ, हाँ. yeah, like even in our lullabies, like Bengali lullaby में घूम पाड़ानी मासी पीसीरा बोलते हैं. So it's basically, you know, like if you're trying to make a kid falls asleep, you are not talking about some tooth fairy or some angel. You're just talking about your aunts, basically. ओके. So it's also a special relationship that I think again women stories में बहुत ज्यादा motherhood के बारे में बात करते हैं. This is like a subset which we don't see that much. या यार विमेन सी आपने बोला ना कि मेल गेज एंड मेल राइटिंग, दैट इज़ वेरी ट्रू. दैट इज़ वेरी ट्रू. जब भी मतलब आदमी लोग लिखते हैं औरत को, तो जैसे अभी इस मूवी में भी मुझे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा. हाँ वो वाला, जैसे कि जो ग्रैंड मदर है, शी इज़ अ स्टेप ग्रैंड मदर, राइट.
Yeah. शी इज अ बिच. सो आई वाज थिंकिंग कि यार क्या ज़रूरत थी. Why can't the grandfather be an asshole? Why the grandmother have to be a bitch? Right? सो वो मेरे को आया था बीच में थोड़ी देर के लिए कि ऐसा, बिकॉज किसी भी मूवी में ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर कुछ प्रॉब्लम, ग्रैंड मदर कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो वो ग्रैंड मदर इज़ द वन हु इज़ लाइक द वन हु इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग द प्रॉब्लम. सो वो मुझे लगा था थोड़ा सा इसमें, बट देना लगे ठीक है यार, चलता है इतना. वो है यार, बाकी तो वहाँ पर भी वो like both of them were white. या बोथ ऑफ So देम वर वाइट या. I think वो this is something that I cannot relate with because मेरी पूरी फैमिली ही बंगाली है कि फैमिली के अंदर जब आप इंटर रेशियल या इंटर कास्ट या इंटर रिलीजियस जब दैट बाइनरीज या आ जाते हैं तो या. लाइक कितने हद तक आप प्यार या काइंडनेस या केयर के साथ उसको ओवरकम कर सकते हैं लाइक इज इट इवन पॉसिबल कि मतलब जनरेशंस के थर और इज इट जस्ट अ डेली स्ट्रगल दैट इज समथिंग आई थिंक बट व्हेन यू से पीपल नीड दैट इस फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में, देन इट द कन्वर्सेशन गोज टूवर्ड्स द मदर ऑफ दीज टू, these women, वाडा टावी एंड लिली, वट एवर हर नेम इज़ इन द फिल्म. उनकी माँ के ऊपर फिर कन्वर्सेशन जाती है, लाइक हाउ वॉज शी, बिकॉज ऑब्वियसली दीज टू वेमेन आर वेरी वेरी नेटिव अमेरिकन इन their demeanor, in their clothing, in their language. So why are they not white enough? Because obviously they have a white father. सो वो कन्वर्जेशन वहाँ पे जाती है. एंड देन वो फिर कैसे होता है, वाई डू दे वॉन्ट टू गो टू दिस डांस थिंग, पावर में क्यों जाना है उनको, वाई कांट दे जस्ट लिव इन न्यूयॉर्क और वट एवर, जहाँ पे लाइक वाइट पीपल लिव, दे कैन कॉल देमसेल्व्स वाइट बिकॉज दे आर हाफ वाइट. वाई या आर दे सो एडमेंट अबाउट कॉलिंग देमसेल्व्स नेटिव अमेरिकन्स. सो वो सब कन्वर्जेशन फिर वहाँ जाती है. या. in fact there is this other film called Passing which is about biracial I mean वो थोड़ा हार्लेम रेनेसा उस टाइम के पीरियड का मूवी है and a lot of people who had black fathers or like some ancestry but they would pass like वही passing is basically passing as white. ओके. So they will entirely hide their actual lineage and everything and integrate क्योंकि उस टाइम तो पूरा segregated हाँ. societies हुआ करते थे. तो पासिंग उस टाइप का एक मूवी है कि जब आप लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे आर वेरी एडमेंट कि लाइक वी हैव टू स्टे रूटेड टू आवर या. कल्चर. या. देयर दिस वुमन शी डज द कंप्लीट ऑपोजिट ओके. and the kind of anxieties and it's a black and white again a very stylish movie ओके. but Oh, this reminds me of that case, OJ Simpson wala. You do you know about I'm it? not black, I'm OJ. Yeah. So like that guy believed he is white. Yeah, yeah. Uh, वो रेशियल सेग्रीगेशन उसके केस की वजह से वो जो टेंशन था दोनों रेसेस में, वो दिखता है यार जब उसका वो रिजल्ट आया था. ब्लैक पीपल आर हैप्पी एंड वाइट पीपल आर लाइक व्हाट हैपेंड. And everybody knows that he was actually a culprit and जो पूरा वो या. racial tension है ना like हाँ. America का like even now every time when there's some veto they have to do about the Palestine issue they always send a black or brown person to fight their racist wars. So which is like just turning the whole ये representation politics जो हो गया ना कि like Black Panther बना दिया है and there's some Muslim heroine in the Marvel या. world. या. Suddenly everything is, like America is post-racial and everything. But you are right, it is a very racist society and they या. use that हाँ, नाटक सब diversity. करना है, नाटक करना है हर जगह. और वहाँ पे नहीं जीत सकते. हिलरी क्लिंटन नहीं जीती थी, कमला हैरिस का तो चांस ही नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ अ वुमन एंड सेकेंडली शी इज़ अ ब्लैक वुमन Yeah. एंड इंडियन, हाफ इंडियन, तो कोई चांस ही नहीं है उसका वहाँ पे अमेरिका में. बस यही है यार. बाकी तो मूवी आई लाइक इट, मुझे अच्छी लगी. गुड सजेशन. Yeah. I'm glad मैंने ये suggest किया because the other movie that I thought that या. I'll suggest that would have been like a really bad decision. Like I will recommend everyone not to watch that movie. विच वन? Demi Moore's The Substance. सब्सटेंस. ओ, ये हाँ. कुछ हॉरर वॉरर है क्या?
Yeah, it's body horror. एह, नहीं नहीं नहीं, वो 100 और वो सब मैंने देखा हुआ है। नहीं। मैंने नहीं देखा है। आई वो कुछ-कुछ बॉडी हॉरर मुझे पसंद है। फॉर एग्जांपल देयर इज दिस मूवी कॉल्ड क्राइम्स ऑफ द फ्यूचर ओके दैट आई लाइक। ओके, पता नहीं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत खून खराबा वो सब, आई डोंट लाइक। या हाँ, सो व्हाई डिड यू एक्चुअली सजेस्ट दिस फिल्म? आपको देखनी थी या फिर ऐसे ही देखी हुई थी एंड यू जस्ट वांटेड टू टॉक? मतलब अभी recent all the movies that I've watched, this is the one that really touched me. And ओके। again, it's a personal thing, and I feel like इस तरह के मूवीज लोग देखते नहीं है, तो why not? ओके। हाँ यार, इस मूवी में एक चीज़ मुझे, मैं फॉरगॉट कि जब इमोशंस पोर्ट्रे हो रहे हैं ना, वो वाला जो सीन है जिसमें वो नीस को लाइक खो देती है और फिर एक बेंच पे जाके बैठती है, उसको पता चलता है कि पुलिस वाले नहीं लेके गए हैं, और फिर हम्म, वो अपना निकालती है और फिर वाडा टावी बोलती है और फिर वो फेंकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट सीन वॉज सपोज टू हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस। आई कुड yeah, सी दैट, बट इट डिडंट हैपन विद मी। वो बस नॉर्मली निकल गया वो सीन। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट हैपन्स इज कि शी रिसीव्स दिस कॉल कि हाँ वी हैव फाउंड टावी। लाइक कि अरे रुक जाता यार, मतलब 2 मिनट एक आध और सीन हो जाता बीच में, एक आध और कट आ जाता, एकदम से क्या हुआ, इतना क्या? सो दैट वाज रियली लाइक, आई वाज लाइक कि नहीं नहीं नहीं, थोड़ा यहाँ पे फिल्म मेकिंग हल्की सी वीक हो गई है। hmm. I don't know. I felt usually जो होता है ऐसे सिचुएशन में दे शो द डेड बॉडी, जो हाँ, उन्होंने जो उन्होंने नहीं किया, या दैट वाज, तो which is sort of maybe it was supposed to be like that or नो दैट वाज अ गुड थिंग एक्चुअली, कि उसको yeah. नहीं दिखाया। और लाइक एक्चुअली वो तो पता ही चल जाता है ना, मतलब वो रेड ट्रक दिखता है और वो खोलता है एंड द गाय जे जे वो गास्प करता है, तो वो लाइक ऑडियंस नोज कि हाँ इधर ही है, वो मिल गई है उसको। सो या आई, बट वो सीन का इम्पैक्ट नहीं हुआ मेरे ऊपर उतना जितना Hmm. होना चाहिए था। I लाइक think I felt that scene was very hard hitting. The one जिसमें when she जब वो गन चला देती है and ओके। all the things that you are talking about, you know, that she's a bad influence, that actually has the fruition because her bad guardianship is basically what led कि वहां पर या मतलब she आई shot somebody. आई थिंक हाँ, मतलब वो थोड़ा सा द गर्ल ऑन द गर्ल्स पार्ट, नीसेस पार्ट, दैट वाज अ बैड डिसीजन। लाइक शी शुड नॉट हैव टेकन दैट गन इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट नो व्हाई शी टुक इट, बट ठीक है उसने लिया। बट हाँ, एक और चीज़ यार, शिट, दिस दिस ऑल्सो रेजेस द क्वेश्चन ऑफ गन कंट्रोल इन द यूएसए। आई लाइक एज सिंपल एज दैट, मतलब क्या है, हाँ, दुनिया इंडिया है यार, यहाँ पे नहीं है लोगों के पास गन। कितने गन वायलेंस होते हैं यहाँ पे? नहीं होते हैं ना, सीधी सी बात है। पता नहीं क्यों ये प्रॉब्लम है यूएस में। इस पे yeah. Also, I don't know if you noticed that place that जहाँ पर वो लोग वो रिफ्यूल करने के लिए हम्म जाते हैं, सेंडिंग दिस किड, शी गोज देयर एंड देयर दिस लिटिल छोटा सा एक सीन है, वो शी इज इन द वॉशरूम एंड दीवार पे शी इज राइटिंग हम्म, यू नो लाइक आ, रोकी यार वाज हियर, उसके और ऊपर ठीक उसके ऊपर लिखा हुआ रहे कि मेक मेक अमेरिका अमेरिका वाइट। वाइट अगेन। या आई वाज लाइक कि माय गॉड, ये क्या वाइट, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इट अमेरिका इज नॉट वाइट, इट या वाज नॉट वाइट एट ऑल। यूरोपियंस लाइक ब्रिटिश पीपल केम देयर एंड टुक या इट। वो सब चीज़ें अच्छे से दिखाई है, लाइक अच्छे से पोर्ट्रे करी है वो सब, बिना बिना बोले, बिना ज्ञान दिए। ऐसे फिल्में जो ज्ञान देती है ना, वो नहीं है इसमें। एक मल्ली मल्ली इडी राजू रोना ऐसे करके एक मूवी है, तो तेलुगु फिल्म है। माय गॉड, 2 घंटे का, अराउंड 2.5 आवर समथिंग रन टाइम है उसका। वो पूरी फिल्म में वो जो कैरेक्टर्स हैं वो ज्ञान देते रहते हैं कि प्यार क्या है। सीरियसली। पेडेंटिक जिसको बोलते हैं। हाँ, आई डोंट नो द वर्ड, बट वो मैंने इसीलिए देखी क्योंकि मुझे उसके गाने अच्छे लगते हैं। लाइक गाने सुनूंगा तो फिल्म देखता हूँ। और आई वाज लाइक कि भाई चुप करो भाई, क्यों मेरे को ज्ञान दे रहे हो इतना यार भाई। बट इस फिल्म में नहीं, ज्ञान नहीं दिया है। लाइक दे जस्ट शोड कि व्हाट्स रॉन्ग विद द सोसाइटी
and how it's actually affecting real people, real emotions, real like lives are being affected in a bad way without giving ज्ञान. तो वो चीज़ अच्छी थी इस मूवी में. मतलब थोड़ा स्टार्टिंग में इट्स लाइक अ हू डन इट, थोड़ा क्या चल रहा है, लाइक व्हाट इज हैपनिंग, यू नो हु इज गेटिंग किल्ड, वेदर दे विल फाइंड द किलर और नॉट, एंड देन सडनली वो बीच में थोड़ा रोड मूवी जैसा हो गया है, या एंड देन फिर थोड़ा थ्रिलर होने की हाँ कोशिश हाँ किया हाँ है, हाँ हाँ. फिर भी थोड़ा स्लाइस ऑफ लाइफ भी हो गया है, तो इट्स लाइक अब जॉनरा डिसाइडेड नहीं है, व्हिच इज मतलब इट्स अ गुड थिंग No, आई it's a गेस. drama film ना. I या. call it a drama film. And एक और चीज़ यार इसमें, it doesn't matter who killed the woman. The since you told me that कि वो MMI like that is a thing. So then it doesn't matter who killed her. The thing या. is she was killed. या. That's the main thing here, right? And why was she killed? कौन मारा, कैसे मारा, वो सब ठीक है. But she was killed, and the child is parentless now. Yeah. So वो सब चीज़ें अच्छी है इस मूवी में. इट्स अ गुड मूवी टू टॉक अबाउट, कैसे बोलूँ मैं, आई वॉन्ट टू पुट इट इन अ करेक्ट वे. इंटेलेक्चुअल वर्ड यूज़ नहीं करना है मुझे. सो इट्स अ नाइस मूवी टू टॉक अबाउट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इश्यूज. या आई विल से दैट. मैं बोलने वाला था कि इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच में बात करने के लिए अच्छी मूवी है, बट दैट्स अ वेरी क्रूड वे टू, वेरी बैड वे टू पुट इट. नो, मुझे फॉर एग्जांपल अगर किसी को उड़ान पसंद है, इफ यू हैव सीन उड़ान, अगर वो किसी का जॉनरा है कि नो मुझे उस तरह की फिल्म्स देखने हैं, तो आई थिंक उनको ये इस टाइप की फिल्म्स भी पसंद आएगा. हो सकता है. या बट दिस इज मच डीपर देन दैट यार. दिस फिल्म इज मच डीपर देन दैट. बट उड़ान में भी दैट होल, इट्स अ इंडिविजुअल लेवल का अब्यूज एंड या ट्रॉमा, या and like somehow getting over it. या. So I guess that way it's similar.